Assalamu alaikum. Bacho, it's a great honor to be here, and I'll be very quick because last time when I came here I took a long time, and when I heard the questions of the students, I was so surprised because in our time when your principal and I used to be here, the intellectual discourse was not so dynamic and not so vibrant. But some of the questions, but most of the questions I got that day, sir, has it been 3 years or 3 or 4 years maybe? They were astonishing. And I've taught 2 years at the Civil Services Academy in Lahore, and dare I say that your questions here in the hall, they were of a much higher caliber than the ones you usually hear elsewhere. So I'll be quick. There might be things that might provoke you. So I'd like to then listen to them in the question and answer session. And my request to the worthy principal to not push me for an early dinner here or something, because it's an honor to be with you. So what I want to discuss with you is to declutter things about Pakistan. Decluttering means, I would have asked you, but because of the paucity of time, कि जब आप चीज़ को क्लींस करते हैं, वो पाकिस्तान को हमने इतनी ज़्यादा चीज़ों में डिवाइड कर दिया है और इतनी कंट्रोवर्सीज अननेसेसरली जनरेट कर दी हैं कि हमें समझ नहीं आता. So I'll just run through this. At first I had decided not to present and to talk, but sometimes pictures stay longer. जो you would बड़े बच्चे सवाल करते हैं कि यार पाकिस्तान का नैरेटिव तो जो ठीक करना है, नैरेटिव का मतलब पाकिस्तान की कहानी, पाकिस्तान की स्टोरी, वो ठीक करना तो हमारा काम नहीं है. मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने CSS का इम्तहान देना है, फ़ौज में जाना है, तो ये तो पाकिस्तान की वो जो इंटेलिजेंसिया है या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं उनका काम है. दैट्स नॉट ट्रू. पाकिस्तान के जो 2 इंस्टीट्यूशंस, जिनमें से कईयों में आप लोग जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के रिसोर्सेज जिन पे लगते हैं, वो पाकिस्तान की फ़ौज और सिविल सर्विसेज हैं. तो ये उनका काम बनता है, उन्होंने नहीं किया. तो पहली चीज़ ये है कि आप जब बाहर जाएंगे, व्हेन यू विल गो अब्रॉड, पीपल विल टेल यू, ओह यू आर अ पाकिस्तानी, सो Muhammad Ali Jinnah injected religion into politics, and the religion which got you extremism and other things. That's not exactly true. In the Khilafat movement, I don't know whether you love your Pakistan studies or not, but in the Khilafat movement, Gandhi came into India from South Africa, and then he, with the Ali brothers, he was the one who injected religion into politics. He went to mosques, other things, and Jinnah kept himself out of the Khilafat movement. This is not what is probably written in your Pakistan studies book, but Jinnah did not like the Khilafat movement, and Jinnah kept himself out because he thought कि अगर आज मैंने religion को आने दिया politics में, तो कल ये लड़ेंगे. और यही हुआ. एक नागपुर का सेशन था जिसमें मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर उठा के अंडे और टमाटर मारे 1920 में, जब उन्होंने कहा कि मैं खिलाफत का हिस्सा नहीं बनूंगा. सो फिर पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है कि पाकिस्तान बना क्यों? पाकिस्तान इसलिए बना था कि 4 या 5 सूबों में जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, मोहम्मद अली जिन्ना वांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी for those provinces. Unfortunately, I don't want to sound controversial, Jinnah at least did not think कि पाकिस्तान का मतलब क्या वाली जो टर्मिनोलॉजी है, जिन्ना साहब का ये ख्याल नहीं था. Jinnah was a Western constitutionalist, a lawyer, a politician by profession.
He wanted provincial autonomy for 5 provinces, 4 of which are part of your Pakistan now. The fifth one is East Bengal. And all these plans that you see here, these were all Jinnah's plans. And when he got a plan in 1946, in which he thought that the Muslims of India got a great deal, he let go of Pakistan. Again, out of your history books. In the cabinet mission plan, Jinnah said, okay, if you accept this, I can let go of Pakistan because the Muslims of India would get political and constitutional autonomy there. Then people will tell you, oh, it's Pakistan. It's because of Pakistan that there was so much bloodshed in the subcontinent. Wrong. There was this collusion between Nehru Sahib and Lady Mountbatten. They were intellectually very close, and Nehru was very close to Mountbatten. So what they did was, again, which is probably not part of your history books, is that the original date of partition was June 1948. इंडिया ने, पाकिस्तान और इंडिया में, यूनाइटेड इंडिया ने जून 1948 में जाना है. They pushed the date back by 1 year so that the state of Pakistan would not remain. So the state of Pakistan would come dying, whispering like a child that cannot breathe. Then I want to distinguish, because I want, when all of you go out of this building of Hassan Abdal, the Cadet College, I want you to be international citizens. That is the dream of your principal also. We don't just want you to be great Pakistani citizens. So you must realize that Gandhi ji, Mohandas Karamchand Gandhi, has to be distinguished from other Indian leaders. Gandhi had his faults, but always ask yourself कि अगर पंजाब में खून की नदियाँ बही थी तो बंगाल में भी तो डिवीज़न हुई थी. बंगाल में क्यों नहीं ब्लड शेड हुआ? बंगाल में ब्लड शेड इसलिए नहीं हुआ कि 2 लोग थे, एक गांधी थे और एक हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे, जो आके पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है, he became a prime minister in end 55 or no, maybe 56 में बने थे. ये जहाँ भी ब्लड शेड होना होता था कि दोनों दरमियान में जाके बैठ जाते थे, और एक पिक्चर में आपको नज़र आ रहे हैं, और कहते थे पहले हमें मारो. सो इफ़ देयर वाज नो ब्लड शेड इन बंगाल, इट वाज बिकॉज ऑफ देम. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि गांधी की डेथ क्यों हुई थी. गांधी की डेथ, गोडसे ने गांधी को इसलिए मारा था क्योंकि गांधी जी ने रोज़ा रखा था कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल एसेट्स पाकिस्तान को दे दो. सरप्राइज्ड? पाकिस्तान के फाइनेंशियल एसेट्स नेहरू और पटेल ने हजम कर लिए थे, सो दैट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कुड नॉट लिव. गांधी जी टुक अ फास्ट अनटू डेथ कि पाकिस्तान के एसेट्स दो, एंड वो फिर लोगों ने, जो हिंदू आरएसएस थी जो आजकल की, उसके एक इंसान ने गांधी जी को गोली मार दी. One of the misfortunes of Jinnah was that that on the Congress side there was a Nehru, there was a Gandhi, there was an Abul Kalam Azad, there was V.B. Menon, one of the craftiest civil servants, then there was Patel. Jinnah had only had one officer of the Audit and Account Service with him, whose name was Chaudhry Muhammad Ali, who also later on became Pakistan's Prime Minister. So Jinnah did not have enough people. His health was failing. He was suffering from bad tuberculosis, and in those days tuberculosis was akin to cancer. Then you'll, I don't know, till now maybe you haven't heard it, but there's a huge controversy in Pakistan about the speech Jinnah made to the Constituent Assembly of Pakistan, which was made on August 11, in which he said that Hindus shall cease to be Hindus and Muslims shall cease to be Muslims, not in the religious sense, but in the political sense. So there's a whole background to this, because there were riots going on.
And in that speech also, which nobody realizes, there are whole paragraphs on corruption, whole paragraphs on nepotism, whole paragraphs on law and order. This speech is important because this is not an ordinary speech. This is the speech to Pakistan's Constituent Assembly, which means this is what Pakistan is supposed to be. Then people will tell you, although not your books, the liberal Pakistan will tell you that there was something seriously wrong with the objectives resolution of 1949. Let me tell you that the objectives resolution was just a normal document, and it has been made out to be a sort of retrogressive Islamic problematic thing. Later on, there was nothing wrong with it. Pakistan had no finances. Pakistan had no defense equipment. Pakistan did not have guns that could fire. Yet Pakistan survived. And one of the ferries that saved Pakistan was the Korean War. Because in the Korean War, आपके जो जूट के और राइस के और वीट के जो ज़खायर थे, उनकी कीमतें 4 गुना बढ़ गईं because of the war, and you could have 2 years, 2 continuous years where you had federal surpluses. Then people will tell you, when you will go to your dinner table at night, people will say, यार इंडिया ने तो 2 दिन में, 2 साल में, 3 साल में अपना आइन बना लिया. पाकिस्तानी लीडर ही गंदे थे सारे, वो आइन नहीं बना सके. ज़रा गौर से पाकिस्तान की शक्ल देखो, उस वक्त के पाकिस्तान की. There is one wing which is Bangladesh, which is 1,000 kilometers away. And if you were ever to study political science, it was so difficult to make a constitution for a place जिसका एरिया वेस्ट पाकिस्तान का ज़्यादा था, पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा थी, और कोई फार्मूला नहीं ऐड करता था. इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. फिर आपको लोग बताएंगे जी मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत बड़ी गलती की कि उर्दू को जिस दिन उन्होंने पाकिस्तान की कौमी ज़बान डिक्लेयर किया, उस दिन ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया. रॉन्ग. इन फेडरेशंस को उर्दू में कहते हैं वफाकी तर्ज हुकूमत. फेडरेशंस के अंदर सेंटर और प्रोविंसेस के झगड़े चलते रहते हैं, आज भी चल रहे हैं. आपको अगर आपने अखबार आजकल पढ़ रहे हो, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब इज at loggerheads with Bilawal on whether flood relief funds should be distributed through the Benazir income support program or else. चलते रहते हैं ये फेडरेशंस की और डेमोक्रेसीज में होता रहता है. सो व्हाट? सो अगेन रॉन्ग. अलबत्ता ये ज़रूर हुआ था कि जिन्ना की डेथ के बाद 1952 में जब उर्दू की बात की गई तो कुछ बंगालियों ने रेजिस्टेंस करके फॉर ईस्ट बंगाल शहादत थी, और ये उनका शहीद मीनार है जो उन्होंने उनकी कमेमोरेशन में मनाया. पता होना चाहिए पाकिस्तान ने उर्दू और बंगाली दोनों को नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर कर दिया था 1954 में. सो वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई थी. सो व्हाट हैपेंड इन 1958 देन? अगर पाकिस्तान ठीक चल रहा था, मसला ये था कि एक इंसान वो था जो जिन्ना के लेफ्टिनेंट था, उसका आइडिया था कि पाकिस्तान पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बने. दूसरा वो इंसान है जिसकी तस्वीर आपके प्रिंसिपल के ऑफिस में लगी हुई है, ओरिजिनल प्रेसिडेंट अयूब खान ऑफ दैट टाइम. ही वांटेड अ पाकिस्तान वेयर डेमोक्रेसी वुड बी लेसर than in Western countries, and he wanted an indirect election. So when they came to a clash, of course Ayoub, the military behind him, he won, and therefore you had martial law. But then it was not all dark. The Ayoubian era in the 60s, it had its good points. Both your big dams have been made with the help of the World Bank during the Ayoubian era. Your Indus Basin Treaty, जिसका आजकल बड़ा जिक्र होता है, इंडिया वेपनाइज कर रहे और ये भी उसी ज़माने में थी. And there was agrarian development, there was industrial development. There was a 10-year period in which Pakistan was compared to the great countries of the world and called a miracle of history and all that. GDP growths
उस ज़माने में ज़्यादा थी, अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे थे. This he is robbing Truman, one of the presidents of the US. However, there were negative sides. Martial law was again implemented in 1969 or maybe 69. Ayub, instead of following his own constitution, handed over the country to Yahya Khan. The reason was two types of inequality. एक होती है वर्टिकल इनइक्वालिटी. वर्टिकल इनइक्वालिटी का मतलब अमीर अमीर तर होता गया और गरीब गरीब तर होता गया अयूबियन एरा में. एक होती है हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी. हॉरिजॉन्टल इनइक्वालिटी का मतलब ये था कि ईस्ट पाकिस्तान गरीब होता गया और वेस्ट पाकिस्तान अमीर होता गया क्योंकि वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हुई. तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ की वजह से अयूबियन एरा में प्रॉब्लम्स भी बहुत थे. And then the 1965 war, Ayub was a very reluctant entrant into the 1965 war. आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि 1965 war, let's make one thing clear. The impetus for the invasion or for Operation Gibraltar and Grand Slam, जब जिब्राल्टर ये था कि वील सेंड पीपल इनटू कश्मीर, कश्मीर में मुँह मुबारक चोरी हुआ था, राइट्स हो रहे थे, सो वी डिड दैट एंड इंडिया रिस्पॉन्डेड. लेकिन हमने जो प्लान बनाया था 1965 की वॉर का, वो लार्जली बड़ा सक्सेसफुल हुआ था. वी वर, एवरीबडी सेड दैट वी हैड द अपर हैंड एंड थिंग्स. द बिग प्रॉब्लम वाज दैट व्हेन यू the commander in the north of the Pakistan forces was General Akhtar Hussain Malik. And when he reached Akhnur was a bridge, और अखनूर एक टाउन भी था जिससे तमाम सप्लाई लाइन जाती थी इंडियन आर्मी की. He did a blitzkrieg. Blitzkrieg का मतलब you rush through with force. And he reached Akhnur on 1st September. 1 सितंबर की सुबह को. आपने तो सुना है ना कि दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया 6 सितंबर की रात को. हमने वी हैड प्लान्स टू टेक कश्मीर एंड वी वर सक्सेसफुल एंड ही वाज देयर. बट राइट इन द मिडल ऑफ द वॉर, probably you can ask questions later on, probably fearing an attack, Ayub changed command. And he called back the victor, who would have been the victor in Akhnur, back and sent Yahya instead. And these 48 hours that were lost meant that the 1965 war was a stalemate. Nobody won. और ये पाकिस्तान की उन माओं का, उन बहनों का, उन बेचारे किसानों का जो आटा, अपने जेवर, जिन्होंने सब कुछ अपना बेच दिया, उनके साथ एक बहुत बड़ा बिट्रेयल था. बिकॉज इफ़ यू हैड एम्बल्ड इनटू अ वॉर यू शुड हैव फिनिश्ड इट. याद रखो कि जो लम्हों की ख़ताएँ होती हैं, उनकी सज़ा आपको सदियाँ देती हैं. और बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने 7 मई को इस दफ़ा लम्हों की ख़ताएँ नहीं की, जिसकी वजह से इफ़ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान, इट्स वन ऑफ Pakistan's great moments in foreign policy and strategic policy. We are being welcomed everywhere. All that started from 7th May. Another topic for questions and answers. So ये लम्हों की ख़ता की थी जिसकी सदियों तक बेचारे कश्मीरी देंगे. You should have taken it. There were no nuclear weapons in those days. इंडिया कितना रिपोस्ट करता. जब इंडिया ने 6th को जब अटैक किया तो अगेन यू हैड टू डिफेंड लाहौर अगेंस्ट ऑल ऑड्स. एंड देयर इज़ द BRB कनाल. जब लाहौर जाओ तो BRB कनाल पे जाओ, देखो अजीज़ भट्टी कहाँ शहीद हुआ था. अजीज़ भट्टी क्यों खड़ा होके आर्टिलरी का फायर करवा रहा था. पाकिस्तान की बाकी आर्म फोर्सेस की उस वक्त 36-48 घंटे में क्यों मोबिलिटी लेट हो गई. वाई डिड सम पीपल
have to embrace shahadat. So all this has to be learned so that we don't make the same mistakes again in our lives, in your principal's life. I'm referring to the principal not only because he is the principal, because he is my entry mate and we are of the same age group. I tell you that we haven't seen this bright moment in Pakistan's history as we are seeing in the past 4 or 5 months. Pakistan that we have seen has been a scene of missed chances, but not anymore. So thank Allah for that. Then people would tell you मुजीब बहुत बड़ा गद्दार था जो ईस्ट पाकिस्तान के लिए. मुजीब के जो 6 पॉइंट्स थे जिस पे वो नेगोशिएट करना चाहता था, दे वर एमिनेंटली नेगोशिएबल. आप आसानी से बात कर सकते थे, लेकिन आप चूंकि उस वक्त इस मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं थे कि आप कुछ करते, तो आपने उसको गद्दार करार दे दिया. ये उसके पॉइंट्स हैं. सिर्फ आखिरी है 6 पॉइंट है, अगर आप देखें कि सेपरेट मिलिशियाज शुड बी देयर. इन एनी केस इफ समबडी वांट्स टू टॉक, you should talk, and I hope I am not crucified for that. Lekin if Dr. Maharang Baloch wants to talk to you, I am still in the service. I should say the truth. If Maharang Baloch wants to talk to you, you should talk to her. You should talk to those ladies who are in front of supermarket telling you that their relatives are nowhere to be seen. Maybe they are wrong, maybe most of them are wrong, but they are Pakistani nationals. You should go and talk to them. Could East Pakistan have been saved in 1970? Yes, easily. Because under the new provisional constitutional order, उसका फैसला ये था कि पाकिस्तान का जो नया आइन है वो ढाका में असेंबली बनाएगी. तो आप ढाका में भुट्टो साहब जाना नहीं चाहते थे. Out of the people here, Bhutto had his mind set on becoming a prime minister himself at that crucial juncture of history. But the blame rests with Yahya and the junta of that time. आपको उसको C-130 में डालते और उसको थप्पड़ लगा के उसको यार एनेस्थेटिक लगा देते. कहते जा यार ढाका, जब उसको होश आता तो ढाका की असेंबली में होता. पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट is supreme ना. You're not blackmailed by people who want to hurt the unity of Pakistan. So let's call a spade a spade. You should have sent him over there. So East Pakistan आपसे चला गया. ये एक अलहदा बहस है. I wish I could take your class on the 1971 war. 1971 की वॉर भी वो नहीं है जो आप समझते हैं. Great sacrifices were given by COs, by brigade commanders, by soldiers, yet for the folly of a few. और उसमें भी 2 पॉलिसीज़ थी. अगर आप ढाका को डिफेंड करते तो आप 1-2 साल तक इंडिया को डिप्राइव कर सकते थे. बट यू हैड अ क्वेयर मिक्स और आपकी लीडरशिप ठीक नहीं थी. सो What were the positive aspects? भुट्टो ने पाकिस्तान में गरीब को ज़बान दी. अभी मैंने आपसे भुट्टो की बुराई की, अब मैं आपसे भुट्टो की अच्छाई कर रहा हूँ. गरीब को ज़बान दी, लोगों को उनके राइट्स दिए, लेबर पॉलिसीज़ दी, और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी. Why is a person good and bad? Because life is grey. Life is not black and white. Very few people are all good and all bad. So we will eat grass. And you know, there's Brigadier Feroz has written a book on Pakistan's nuclear program which is called Eating Grass. Right of passport, labor policy. What were the negative aspects? In a wave of populism, all the good that had been done till the Yubian era, he decimated everything. हर चीज़ उड़ा दी. ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों के ऊपर
उनको सेव करते हैं, उनके ऊपर इंक्रीमेंटली उनको बेहतर करते हैं और बुरी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ये नहीं करते कि एक किसी का नाम एसोसिएट हुआ तो आप उसको उड़ा दें हर चीज़ को। सो दैट इज़, सो देन आजकल का फैशन है जनरल ज़ियाउल हक़ एरा वाज ऑल डार्क। नो, व्हाई डू आई से दैट? जीडीपी ग्रोथ, इस्लामिज़म पे 100 मुसीबतें हैं, relationship with the US, and remember, you would not have been allowed by the West to have your nuclear deterrent had Zia not been an active participant in the Afghan war. आप सड़क पे जाएंगे, लोग कहेंगे जी वो अफ़गानियों को अंदर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम इसलिए है बिकॉज यू वर एन एक्टिव पार्ट of the Afghan war against the Soviet Union, and that gave you the leeway that also Israel and India had made plans to take out Pakistan's nuclear program, but so that they would not offend the US at that time, they couldn't do so. So we crossed the threshold in 1985, and the Afghan war was started in 1979 and up till 1989. So we crossed the threshold in 85. We tested later, and our missile program and everything. Then there's a sentence जो कहते हैं the 90s की जो decade थी, जो 90s थी, आप ये तो पैदा नहीं हुए होंगे अभी, 90s की decade जो थी वो totally dark decade थी. Again not correct, क्योंकि जो आपकी 18th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, अभी आप में से हर सूबे से लोग आते हैं, जो पाकिस्तान के मिनॉरिटी प्रोविंसेस हैं वो पाकिस्तान की फेडरल स्ट्रक्चर का इसलिए हिस्सा हैं ज़्यादा अच्छा आज कि 18th अमेंडमेंट ने उनको फाइनेंशियल राइट्स ज़्यादा दिए, बलूचिस्तान को ज़्यादा राइट्स मिले, पंजाब ने अपना शेयर काटा और दिया। फेडरल गवर्नमेंट को आजकल और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को, सिंस वी आर, आई डोंट वैसे केयर ऑल्सो, दे थिंक दैट बिकॉज वी गेव अवे सो मच टू द प्रोविंसेस, so therefore the federal government has nothing. Well, we had to save the federation. There is no secessionist movement in Pakistan. There is insurgency, you might call it law and order problem in Balochistan, but there is no active secessionist movement. Secession का मतलब होता है लैद की पसंदी, पाकिस्तान में नहीं है. And then this is not the, let's skip this. This is regarding General Jahangir Karamat's speech at the Naval War College. It took place on October 5, 1998, and the then Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif, he called him and he removed him from office, which is like, which started an unpleasant, the new unpleasant normal in civil military relations. But let's look at the Lahore process. This is the Indian cabinet in the bus. ये बस में इंडिया की कैबिनेट बैठी हुई है और ये प्राइम मिनिस्टर है आगे और पीछे ये सारे, उनमें एक एक्टर भी है फेमस, वो सारे थे, वो बस पकड़ के बाय रोड पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से पाकिस्तान के साथ सुलह सफाई करने के लिए, और मीनार पाकिस्तान पे जाके द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रोट that he had good wishes for Pakistan, which meant that the then BJP, this is the Minar Pakistan, it accepted the idea of Pakistan. Before that hota tha ki ye nahi hai. And one of the best books on the topic that you can ever read in your summer holidays or whenever is Naseem Zahra's book. And Naseem Zahra's book is important because it also tells you about the civil military relationship process. The good and bad of the Musharraf era: GDP growth, relations with the US, economic well-being of the people. Again, the bad side, there was one person who could have
who could have had the US build dams in Pakistan. I was in Washington when Musharraf used to come to repeated visits to Washington. If Musharraf would have asked for the moon, the Americans would have given the moon to him at that time. In those 3 years, from 2001 to 2004, if Musharraf would have asked for the moon, they would have given him the moon. But he instead worked on other things. The years 2000 to 2013 to 18 were those years when Pakistan was again taking off. And this is your current Chief of Army Staff, who spent 3 days with us in Muscat, and he kept on repeating it, that had we not intervened and removed Nawaz Sharif through that idiot, and you can tell Saqib Nisar this, that I called him an idiot. What, did I press something? Yes. So Pakistan was at a takeoff stage, and again we intervened wrongly. The good things, evaluating Prime Minister Imran Khan, one of the greatest things that he did was Imran himself enunciated a good COVID-19 policy. Imran's COVID-19 policy made Pakistan lose much lesser lives than other people. But deficit kept rising, and then there was state subjugation of freedom of press, much akin today. So it was mixed. The judiciary was in ruins, and each one of them, I need not, बाकियों का छोड़ दें, जो फर्स्ट हैं ये जस्टिस आसिफ खोसा हैं. ये जब एक केस सुन रहे थे तो उन्होंने स्टार्ट इससे किया कि आर वी टॉकिंग अबाउट द सिसिलियन माफिया. The minds already made. The judiciary of Pakistan nowadays also is at a very low ebb. बहुत दुख की बात है. We have gone from one extreme to the other extreme. Judiciaries need to be powerful. Judiciaries need to catch the executive by their throat and bring them down. You're all familiar with this term. So, one of the things that the Indians keep on debating in their TV programs is कि यार वो कौन सी PL-15 मिसाइल थी या क्या था कि इनकी एयरफोर्स ने हमारे जहाज़ मार दिए, जो मानते हैं. Actually, it was the training. You enunciated training programs with the Chinese Air Force and the Chinese Army for the past 10 years. The Pakistan Army and the Pakistan Air Force, especially the Air Force, has made itself into a very forward-looking arm. And they were ready. They were ready in 2019 when Operation Swift Retort took place and you shot down Abhinandan. And they were much readier this time. And this is today. I don't agree with this. I don't agree with Baba Trump holding Asim Munir on one side, Shahbaz Sharif on the other, and saying these are two great men, as if we want his recommendation. I don't agree with this, but it can't be bad. Zelensky has had a bad time. The UK Prime Minister has had a bad time. Pakistan is having a good time there. So in that sense, it's okay. Lessons are that you should read. Your generation must read. You must become the tellers of Pakistan's real story. I've shortened everything else. Durable political systems ultimately rely on institutions and not individuals, which means if you go back here, I hope institutional cooperation is also done. You can't remain engaged. Neither is Trump permanent, nor is Shahbaz Sharif permanent, and nor other people in this picture. Institutions should collaborate. One of the worst performing
Pakistan's institutions is the civil service. I belong to the civil service, so I have every right to say so. आप किसी गरीब पाकिस्तानी को कहें कि उसने डीसी के दफ्तर जाना हो, वो पहले डीसी के रीडर को रिश्वत देता है. अगर आप गरीब पाकिस्तानी को कहें कि उसने एम्बेसडर के पास जाना हो, वो पहले एम्बेसडर के पीए को और उसके स्टाफ से नीचे यारियां लगाता है, उनको गिफ्ट्स देता है, तब उसकी बारी आती है. सीधे तरीके से आपने पाकिस्तान के लोगों को एक सही सिस्टम ही नहीं दिया. पाकिस्तान की आर्मी की परफॉर्मेंस कैन बी डिस्कस्ड. आई टोल्ड यू अबाउट देयर बैड परफॉर्मेंस ऑफ द लीडरशिप इन 1965, bad performance in 71, very good performance otherwise. Also in 1965, the general who was responsible for planning the war was at Akhnur. लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान आर्मी के साथ पाकिस्तान का आम इंसान फ्लड्स में डील करता है और रोज़ डील नहीं करता. पाकिस्तान की सिविल सर्विस के साथ रोज़ सुबह से रात तक पाकिस्तान का आम इंसान डील करता है. अगर आपने इस नेशन को यूनाइटेड रखना है और इसको अच्छा रखना है, तो यू विल हैव टू रिफॉर्म द सिविल सर्विस. एंड दूसरा जो आपकी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं, आपकी दो चीज़ें आपकी इकोनॉमी को हर्ट कर रही हैं. एक आपका सर्कुलर डेट जो एनर्जी रिलेटेड है, वो आज अ प्लान हैज़ बिन लॉन्च्ड. आई थिंक द प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन वीडियो लिंक विद पीपल, उसको ठीक करने का. और दूसरी चीज़ आपकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं जो आपके लॉसेस हो रहे हैं, रेलवेज़ में, स्टील मिल में, बाकी जगहों पे इतनी इंस्टीट्यूशंस हैं. अगर आप उन्हीं को रोक लें तो आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल स्पेस मिल जाएगा. फॉल्स नैरेटिव से बचें, हकीकत में रहें. और आई एम जस्ट डेडिकेटिंग दिस, आई विल फिनिश टू वन ऑफ द लेडीज़ हु इज़ नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड नाउ. 1970 से लेके till her death, like 3-4 years ago, she kept on fighting for the rights of Pakistani women, for the rights of oppressed Pakistanis. I have very quickly finished it so that I can take questions from you. Right? Thank you very much. Yes, beta. Yes, please. Sir, my name is Muhammad Ali. I teach English here. I just wanted to ask that a few months back, our phone call was not being received in US, and now you showed the picture that our Prime Minister is sitting with it. So, how do you decipher this thing that we will not be glitched, we will not be sold again for their petty gains in this entire regional war that is going on in the Middle East? And I would also like to ask your insight on it, that how do you see the recent pact between Saudi Arabia and Pakistan? What are the parts of it? Okay. So the second question first, the Saudi Arabia-Pakistan pact, mostly it's good, but it puts you in a very challenging environment. It puts you in a very challenging environment because you are liable, you might get later on, or if you provide a nuclear shield, which we have no information till now, whether the defense cooperation provides a nuclear shield, you might become a victim of an Israeli attempt. But Israelis won't be able to be successful, in my humble opinion, because you are no longer in the stage of developing your nuclear deterrent. Your nuclear deterrent, आपका nuclear deterrent developed है, spread out है. It's not kept at a अमरो यार की जंबील में कि इजरायली पहुंच जाएंगे. अगर वो आपके एक इंसान को माफ़ कर दें, माय यूज़ ऑफ द वर्ड्स, दे बाय पीपल आउट. They buy people out. They used electronic surveillance to kill. How many can they kill? Pakistan's nuclear assets are very well protected, very well guarded. Actually, people, insiders, the Westerners said that Pakistan's nuclear deterrence is the most well guarded and the most, there's a specific term for it. It's the safest in the world. So the Israelis will have something up their sleeve,
and but still it puts you in a very volatile environment. But अगर आप ये भी ना करते तो रोज़ जो आप ये अपने आप को सुबह से शाम दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह फ़लस्तीनियों के हालात बेहतर कर, अगर आप ये भी ना करते, आप एक ऐसी जगह का हिस्सा ना बनते, तो फिर आप अपने आप को कैसे माफ़ करते? सो देयर इज़ मोरालिटी इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो. So I think it was the right decision, it was a moral decision, but it puts you under challenges. It puts you under challenges. I don't know the details, actually nobody does till now. पहली चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि can the Americans ditch you again? Absolutely. बिल्कुल. Americans अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे. आजकल उनका नेशनल इंटरेस्ट उनको खुद नहीं पता क्या है. उनकी स्टेट डिपार्टमेंट जो पॉलिसी ब्रीफ्स ऊपर भेजती है, ईमेल्स वो ट्रैश हो जाती हैं, और एक प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट और उसकी एक इनर कैबिनेट है जो सारे फैसले करती है, विच पार्टली इज़ गुड फॉर अस, क्योंकि उनकी जो प्रो इंडिया पॉलिसी थी वो उनकी इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी थी. सो बट इट्स ओके, बट देयर इज़ नो गारंटी, देयर इज़ नो गारंटी. एंड आई थॉट यू माइट आस्क मी कि ऐसा क्या हुआ ये कि तमाम दुनिया ये समझती थी कि इन अ कन्वेंशनल वॉर इंडिया विल रन यू ओवर. 5 गुना आबादी और पता नहीं कितने गुना इकोनॉमी और आर्मी, और उसके वो जो टेबुलेटेड चीज़ें रखते थे, एयरफोर्स बड़ी 3 गुना, आर्मी पता नहीं कितनी गुना. Nobody thought you would give them a bloody nose. So once you gave them a bloody nose, people suddenly said, oh my God, India lied on Pahalgam, no proof. They still attacked Pakistan, Pakistan shot their planes down. वो अभी वो पता नहीं क्रिकेट के अंदर वो हारिस रऊफ जो है 6-0 करता फिर रहा है बाउंड्री के ऊपर, उसके ऊपर शायद कोई बेचारे के ऊपर कानून ही ना लगा दें. तो 6-0 के बाद अब लेटेस्ट फिगर ये है कि 7-0 हो गया है. वैसे एयरफोर्स का भी कोई पता नहीं बढ़ाया जा रही है रोज़ के हिसाब से. सो देयरफॉर एक झूठ उन्होंने ये बोला इंडिया ने. दूसरा इससे भी बड़ा झूठ बोला जो लोग नहीं बताते, वो ये है कि भाई जब मार्को रूबियो उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रोज़ फ़ोन कर रहा है, एक दिन शहबाज शरीफ को, अगले दिन मोदी भाई को और जयशंकर को. वैसे ऑफ ऑल द जोकर्स इन द वर्ल्ड जयशंकर इज़ नंबर 1. मतलब वो कभी ग्लासेस डार्क पहनता है, कभी चेंज करता है. ये जो स्वैग होता है ना, इन बच्चों को प्रिंसिपल साहब स्वैग का बहुत पता है. ये आजकल के बच्चे हैं ना, ये स्वैग जो बहुत ज़्यादा होता है ना, ये इसका डाउनफॉल भी उतना ही सख्त होता है. इसलिए कहते हैं कि अल्लाह की ज़मीन पे सर झुका के चलो. इस्लामियत के टीचरों पता नहीं सूरह हुजरात कोर्स में है कि नहीं है बीबी? जी प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन. वंडरफुल क्वेश्चंस आपके, बहुत अच्छे थे. मैं लिटरेचर में मास्टर्स करना चाहता था, नहीं कर सका, ज़िंदगी की अनमिट ख्वाहिश. यस प्लीज़, दैट बॉय देयर. यस. Sir, my name is Bashir Sultan. I'm from upper 10th class. So I wanted to ask you that the things we learned today are actually quite different from what we are taught in history books. And it is a lot different in how it is represented in media and literature. And I wanted to ask you, who do you think is responsible for this act of miscommunication, and what are its consequences, and what can we do to solve this issue? Better to solve this issue, you need to learn to tell the story of Pakistan, which is very bright. Americans had to lie about their narratives in Vietnam. वियतनाम में एक मैसेकर हुआ था, माइलाई मैसेकर हुआ था, जिसमें एक अमेरिकन ने सारे वियतनाम के एक विलेज को मार दिया. वो सारी ज़िंदगी झूठ बोलते रहे. पाकिस्तान को इतना कुछ झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं. आपका जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है उसने कुछ गलतियाँ की ज़िंदगी में, लेकिन ही इज़ अबव बोर्ड पर्सनली, फाइनेंशियली. ही वॉज कफिंग विद tuberculous lungs and having caravan cigars and making Pakistan for you. His love story with Rati is one of the most romantic stories of all time. Compare that with the affair between Jawaharlal and Edwina Mountbatten. Imagine. मसला ये है कि आपकी जनरेशन में ना सबको आग लगी हुई है बाहर भागने की.
माफ़ कर दो मुझे, बच्चे हो मेरे, बच्चे हो सारे। लेकिन आप लोग ना, एक वो पहली स्लाइड भी थी वो मैंने जल्दी में कर दी। बेटे पाकिस्तान की इतनी चीज़ें अच्छी हैं। आई कुड हैव स्टेड इन द US, इन कैनेडा, आई कैन स्टिल गो देयर, settle permanently, but I won't. I would live in my very small house in Islamabad and feel the air of Pakistan, turn the leaves of Dawn newspaper. पता है ट्रिब्यून के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स भी आता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का अगर एक आर्टिकल एक दिन में पढ़ लो, इट्स सो ग्रेट। तो बेटे बहुत दुख की बात है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारे वालिदैन रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने जब पाकिस्तान बनाया तो हमने एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट बनाने की कोशिश की, वो तो थी नहीं। पाकिस्तान उसके सूबों की वजह से खुशहाल है। और हमने शुरू में कोशिश की, आपने एक जुमला सुना होगा, मेरे सामने सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी इसकी बात ना करो, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूँ। दिस इज़ द बिगेस्ट रबिश ऑफ ऑल टाइम। अगर आप एक अच्छे सिंधी हैं तो आप अच्छे पाकिस्तानी हैं, अगर आप एक अच्छे बलोची हैं तो आप एक अच्छे पाकिस्तानी हैं। दिस इज़ द फेडरल प्रिंसिपल। पाकिस्तान के जो अर्ली लीडर्स थे, जिन्ना के बाद उनको पॉलिटिकल साइंस भी नहीं आती थी, तो इसलिए उन्होंने एक हिस्सा एक तरफ और उसके ऊपर एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाने की कोशिश की। तो हम बहुत मुश्किल हालात में से बेटे निकल के आए हैं, एंड वी आर एंजॉयिंग अ ब्राइट मोमेंट इन आवर हिस्ट्री। चेरिश इट, बट लाइक्स योर सर आस्क्ड, देयर इज़ नो गारंटी दैट द US won't ditch you. When the time comes it would, but probably not for the next 3 years. He has a vibe with the field marshal and a forced vibe with the prime minister. Next question, bete, right there, the boy in the specs here. Sir, so I am Abdullah Hussain from On Saving First Year. Sir, so I have 2 questions if you allow me to ask. Sir, the first would be, earlier you had a slide on the brain drain in Pakistan. You also mentioned in the question of the guy from Umring. Sir, so I think we cannot blame Pakistani youth from going out of Pakistan. True, I agree with you. Sir, so but still we had to stop this brain drain. So I think the most effective way is to create jobs, to create enough advanced jobs for the youth. And in order to do so, creating startups is the first step, I believe. Sir, so because deep tech startups and this stuff will provide jobs and grow into multi-billion. Agreed. Sir, so in order to create these startups, I believe that there are 2 to 3 road bumps in our way. First would be cultural. Pakistani people are very scared of taking risks and stuff. So the one thing which you said, the roadblock institution, one of the most difficult institutional roadblocks is your bureaucracy. The bureaucratic mindset जो कोई नई चीज़ सीखने नहीं देता और ताकत पे कब्ज़ा रखना चाहता है, इसको सिर्फ पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ठीक कर सकती है। अगर यही ठीक हो जाए ना तो आपके बाकी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आई टोटली एग्री विद यू, योर कमेंट्स वर वेरी एरुडाइट एंड वेरी इंटेलेक्चुअल। जी नेक्स्ट, जी बेटे बैक। Assalamu alaikum sir, my name is Daniel from Iqbal Wing second year. My question is that you said that Pakistan economy was taking off in 2013 to 2018 era because we had an open relations with China. So today should we... Did I mention China? Sir, but because of CPEC and all that... No, not because of CPEC. Because of macroeconomic policies. Not because of CPEC. Sir, so should we have today should we have an open relations with China by joining BRICS and all these, or should we have the same under the table relations with China today? No, we don't have an under the table relationship. Sir, we had good relations with America today and we are having... But first look at China. आपकी जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है वो तो लोगों को रात को अंधे ख्वाब दिखा रही है सर। ओपन है अब तो। I mean, there can be nothing more open than a JF-10 shooting down Rafales. Sir, we are not that much open on CPEC and not continuing that नहीं, project. CPEC के बारे में no, we are pretty open. There are some things, you're right, there are some routes, there are some things
प्रायोरिटी वाइज नहीं पता चलता। उसकी वजह ये नहीं है कि हम जान के छुपा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो हमारी CPEC को प्रोसेसिंग प्लानिंग डिवीज़न करता है, वो अब दोबारा प्लानिंग डिवीज़न करना शुरू हुआ है। वो जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी तो एक नई बॉडी बना दी थी, CPEC जैसी मल्टीलैटरल किस्म, मल्टीलैटरल इज़ द रॉन्ग वर्ड, मल्टी डोमेन, अब मल्टी डोमेन पे एयरफोर्स वाले आ जाएंगे, जो इतना वसी एक चीज़ है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, डैम्स हैं, रोड्स हैं, जोन्स हैं आपके, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए तो आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए ना। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है। सिमिलरली विद द सऊदी अरेबिया पाकिस्तान डिफेंस रिलेशनशिप, you will need to strengthen yourself to process the relationship. To process the relationship, you will need expert advice. You will need other things. Yes, on this side. Anybody on this side? Yes. Assalamu alaikum, sir. I am Fakhriz Pasha from Examining Metric. Sir, my question is that having served 4 years in the US, how far do you think that the narrative that the US congressmen base their policies on Israeli interest, and how much do you think that AIPAC influences the US policies? The Jewish lobby exerts an inordinate large amount of influence on US policy, congressional as well as the administration. And there are corrupt practices in the US too. Ji bete side pe, who else? Yes, in the front. Assalamu alaikum, sir. I am Ali from Lakating. Sir, my question is that in Pakistan, should there be a separation of church and state or mosque and state in our country? Mosque and state and? In our country, sir. Mosque and state जी, sir. हो नहीं सकती, इसलिए नहीं हो सकती, टोटली नहीं हो सकती, काफ़ी हद तक हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती कि आपकी सरिश्त में, आपके मुल्क के खून के अंदर ये इस्लाम एज अ comprehensive code of life is inbuilt in your blood, so you cannot have a total separation. But by the way, it is now cosmetic. जितनी unity है वो cosmetic है। पाकिस्तान में इस वक्त इस्लाम and statehood are not united. There is just cosmetic. बहुत डिटेल में जाया जा सकता है। Very good question. ऊपर here, yes बेटे। Hello, so Assalamu alaikum, I am Mashmoor Aswad from Jinnah 9. And so the last time when we had a guest speaker, he said that Mujib, he was with secret agencies, he was linked with Nehru and he wanted Nehru to get him out of Pakistan and the association of... He was linked with Nehru? Yes. Nehru and Mujib were not contemporaries. They were born in different eras. So your speaker had it wrong. Nehru died in 1964. डेड। मुजीब का जो था ना राब्ता, वो एक सेकंड सेक्रेटरी के साथ था अगरतला कॉन्स्पिरेसी में। अगरतला कॉन्स्पिरेसी में मुजीब को इम्प्लिकेट किया जाता है, लेकिन ऑल सेड एंड डन टिल द वेरी एंड ही डिड नॉट वांट अ डिसयूनाइटेड पाकिस्तान। बड़ी लंबी बहस हो सकती है, बट वेरी गुड क्वेश्चन। यू इन क्लास 9, यू वेरी गुड। हैदर विंग का लड़का, yes. Assalamualaikum, sir. Sir, I have one question that, in your opinion, was it worth it to save East Pakistan? Because after all the 6 points that we saw of Mujibur Rahman, sir, it was evident from them that East and West Pakistan have been separated except from the tag of Pakistan, like different policies, different foreign policies. अमेरिका में ना जो शुरू में ना इनका फेडरल सिस्टम सिक्योर नहीं था, तो एक इनका जज था, उसका नाम जॉन मार्शल था। मार्शल ने अपने जजमेंट्स के ऊपर अमेरिका को यूनाइटेड किया। इनकी सिविल वॉर जो थी, एक दूसरे की जान के मुखालिफ थे। तो बेटे, अगर ईस्ट पाकिस्तान ने उसके रास्ते पे भी जाना था तो आपकी किसी सूरत में आर्म्ड फोर्सेस की डिफीट नहीं होनी चाहिए थी। दैट्स व्हाई आई सेड कि यू शुड हैव सेंट भुट्टो टू नेगोशिएट देयर, एंड इफ यू वांटेड टू कम टू अ कन्फेडरेशन यू शुड हैव डन इट पीसफुली अंडर नो सर्कम्स, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान वाज एक प्रवीण सोनी है
इंडिया का डिफेंस एनालिस्ट है, इन दिनों में बड़े फेमस हुए हैं, फोर्स मैगज़ीन निकालते हैं। वो बार बार इंडियंस को कहते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान का खुमार दिमाग में से निकाल दो, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान वॉज इनडिफेंसिबल, यू कुड नॉट सेंड सप्लाईज देयर। बीच में उन्होंने एक एयरक्राफ्ट हाईजैक करवा के फ़्लाइट्स रुकवा दी। किसी सूरत में भी 16 दिसंबर नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हें शायद ये बात ना समझ आए, वेन एवर 2nd, 3rd, 4th दिसंबर गुजरते हैं ना और आहिस्ता आहिस्ता 16 दिसंबर का दिन करीब आना शुरू होता है, एक तो दूसरी ट्रेजेडी भी होगी आर्मी पब्लिक स्कूल वाली, लेकिन आई कांट स्लीप। मैं इंडियंस को इन एंड इनसाइड आउट जानता हूँ, आई स्टडीड विद देम। मैंने, मेरा ख्याल है जितना बड़ा मैं लिबरल होता था जब मैं जॉर्ज टाउन में था, मैं घर पे उनको बुलाता था, उनके लिए वेजिटेरियन खाने बनाता था कि यार इनका साथ थे इंडियंस मेरी क्लास में, मैं अकेला पाकिस्तानी था। जब आखिरी दिन की प्रेजेंटेशन थी, दे टोर इनटू मी, दे ट्राइड टू स्लैश मी टू श्रेड्स, क्योंकि उनको एक दिन पहले किसी ने, जो क्लास का टीए होता है, उसने कहा था कि वो जो पाकिस्तानी लड़का है ना उसके तुमसे कोई 0.25 मार्क्स ज़्यादा हैं, सो दे डिसाइडेड कि इसको उड़ा देंगे आज। तो माफ़ कर दो, आई डोंट वांट टू कंडेम अ नेशन, इट्स अ ग्रेट नेशन, बट दे विल नेवर, अगेन यू माइट थिंक आई एम ओल्ड फैशन, they won't accept you. And a bully like Israel and a bully like India is answered by bullets. You cannot negotiate with a bully. Remember my word, in life too, if there is a bully, you have to stand up to a bully and punch him on his face. Bullies kabhi bhi baaz nahi aate. So Pakistan has delivered a punch, and Pakistan has to be very careful because Operation Sindoor is continuing. It is continuing every day in Balochistan, in KP, in cross-border terrorism. वो तो नहीं है काम कर रहे, वो तो ओपनली अफर्म करते हैं कि बलोचिस्तान की आज़ादी हमारी कल्मिनेशन, ओपनली कहते हैं। सो फॉरगेट कि अगर कभी तुम्हारे, जब तुम लोग अभी यहाँ से निकल के यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, यू विल मेक अ ग्रेट इंडियन फ्रेंड और एन इंडियन गर्लफ्रेंड, एंड देन यू विल सडनली थिंक दैट इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री जो सर इमरान और ब्रिगेडियर नासिर पढ़ा रहे थे वो गलत थी। बड़ी जल्दी पता चल जाएगा कुछ अरसे के बाद कि वो सही पढ़ा रहे थे आपको। जी ऊपर इस तरफ, यस बेटे, यस, the gentleman with the specs. Hello, my name is Muhammad Ali Jinnah and I am from Hyderabad 9. Wow, thank you beta, thank you. So basically my question is, And just one point of clarification, beta, you have a freshness of the face like 9th class, but you're tall like a basketball player. That's why I only said you don't look second year from the face. Huh? is that why did Pakistan focus on building a missile nuclear range over 5, despite knowing the fact that there was a country like Israel? Why did Pakistan not do what? Didn't build a missile having the range over 5,000, despite knowing the fact that there were threats from a country like which you mentioned, bully, like Israel. Israel has never been a bully towards us. It is now that it's going to probably do that. And maybe we have something up our sleeve over 5,000 also. We can reach Israeli cities. Allah kare wo naubat na aaya. ठीक है, these are all deterrent things, but we should be ready. जी ऊपर इस तरफ, anybody on this side? No. On this side in the middle? Yes. The gentleman near the air conditioner, please. Again, Principal Saab, such wonderful questions. I mean, Assalamualaikum sir, my name is Ali Singh from Janabi Kuwait. So sir, I have seen a video in which Bhutto was saying that
I would say is good. The cause of valuable say to the Bengalis at the partition in 1971. I guess I think it was the Prime Minister or President. नहीं, वो ये कह रहे थे, लाहौर में जलसा था, वो ये कह रहे थे कि अगर नहीं हमारे मेरे साथ मिलते तो जाओ जहन्नम में जाओ. The phrase was जाओ जहन्नम में जाओ. That was a political statement. So, sir, doesn't a leader play an important role in case of any dispute? We can see that we're already in chaos, so doesn't a leader plays an important role? He does, and maybe that sentence was a little overboard, लेकिन उसका कोई context और था. उसका ना एक context था, and I remember the speech you are referring to is very apt, लेकिन उसका कोई context और था. लेकिन उधर उन्होंने ना एक phrase associated है भुट्टो साहब के साथ, इधर तुम उधर हम. वो उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मेरी पार्टी का कोई MNA ढाका नहीं जाएगा. लेकिन उस सारे के अंदर जनरल याहिया और जो 6-7 आपके जनरल फरमान, ये असद उमर के अब्बू, ये सब शामिल थे. वो भुट्टो खुद नहीं बोल रहा था, he was speaking generally, so it's not right to simply blame Bhutto. The leadership of that time should have realized that Indira Gandhi and the Indians are going to exploit East Pakistan, and they should have called the assembly session in Dhaka. I am sure, I speak here on record, and this would be recorded, that had you called the assembly session in Dhaka and let them be there for 60 days, Indira Gandhi would not have been able to mobilize plans of attacking Pakistan. Ji bete, is there somebody right at the back? I saw a hand, no I didn't. Yes, the boy in the third last row, please. Both of you can, after you can ask the question. And let's take 2 questions at the same time, yeah. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam, bete. Assalamu alaikum, sir. I am Abdullah Khurram from Aurangzeb Matric. So I wanted to ask, how did Pakistan go really high on economic growth from 2013 to 2018? From 2013 to 2018? Yes, sir. Because there is something called macroeconomic decent governance. Not great, but decent governance. You take care of the fiscal deficit, you try to increase your taxes, you try to cut spending, and whether I'm sure you are youngsters, you belong to the other side of the political spectrum. The Prime Minister from 2013 to 2017, and in his earlier periods to after Ayub, most of Pakistan's infrastructure has been set up by him. So that's one of the good points amongst the bad points. मैंने एक दूसरे बच्चे को यहाँ हाँ की थी सवाल की. Yes. You are not doing very badly nowadays too. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Jinnah from Aurangzeb Matric. My question is that recently there has been a pact with Saudi Arabia, Pakistan and Saudi Arabia. As we know, Mossad and Israel's intelligence with Mossad, they will try anything to invoke a war. So how often is it that they will try to worsen the relationship through India and will try to attack through India, just like in the past month we have observed, and it has also been thought of that Israel was behind the attacks. Which ones? Yes? The ones in Pakistan? Yes. But we have no evidence that Israel is behind them. India is. India is behind every attack. But point well taken. You will have to care for that. But then, आपके बिल्कुल पीछे बेटे 2-3 हाथ हैं. Assalamu alaikum, sir. My name is Heather Sultan from Iqbal Wing Metric. So my question is not really regarding your content, but rather its credibility. Yes. So I just wanted to ask, what sources and research methodology do you use to reach your conclusions when you testify Which against... methodology? Yeah, what research methodology and sources do you use? I just read like you or your father.
What books? I mentioned two of the best books there. Yeah, but how do you authenticate those sources? How do you know they're authentic? But again, it's my opinion. Again, it's mostly my opinion. There is no universal truth or universal lie. We read and we come to our opinions. But most of it, there is a book by Hassan Abbas. पता नहीं मैं इसमें mention कर सका कि नहीं. It's called Pakistan's Drift into Extremism. It's a masterpiece. His name is Hassan Abbas. The name is easy to remember. Hassan Abbas, Pakistan's Drift into Extremism. It's a very... You need to read multiple opinions. If your question is still generalized, That's true, but don't you think presenting your opinion as rebuttals is generalized. Then you have to read different... Isn't that kind of wrong? Sorry, presenting your opinion... Presenting your opinions as rebuttals, isn't that kind of wrong? No, I think my opinion is true. I think it's based on facts. Oh, all right, thank you. The boy behind you, beta. Assalamu alaikum, sir. My name is Mazate from Iqbal Wing, first year. Sir, I just wanted to ask that what are your thoughts on the crisis during the reign of Iskandar Mirza? As you all know that he had multiple... The reign of Iskandar Mirza? Yes, sir. What do you want to ask? Sir, that he had multiple governments dismissed during his time. And he did what? Sir, he had multiple governments dismissed during his time in the office. Multiple governments, yes. And sir, moreover, during the 90s decade, as you had previously discussed, there was alternative exchange of offices between Benazir Bhutto and Nawaz Sharif. Do you think that this was more disastrous for the country's democracy than Zia's? What was exchange between Benazir and Nawaz Sharif? Offices during the 90s decade. No, they did not exchange them. Sir, because of the 18th Amendment, first Nawaz Sharif came, then Benazir Bhutto, then again Nawaz Sharif. 18th Amendment is different. Sir, 13th, my bad. Sorry. 13th Amendment, yes, fine. 13th Amendment में भी बेटे elections took place, a process took place. You may have an opinion that they were rigged, fine, but it was not as if they were both. There is no love lost between the two parties. There is no love lost. So एक दूसरे को वो इक़्तिदार देने के लिए नहीं थे. आपके पीछे एक बच्चा था बेटे और आपके पीछे भी आप दो लोगों से क्वेश्चंस पूछना ताकि टाइम बच जाए ना. दो को माइक दें, पहले एक को दें फिर दूसरे को दें. Assalamu sir, my name is Muhammad Yasin and I am from Heathering 10th. Sir, while discussing history, you said that Zia's era was not all bad, but later helped us reach nuclear strength. But don't you think that General Zia was used as a puppet by the USA in the Afghan miracle, and his actions later took us straight in the mouth of USA and made us dependent till date? What are your thoughts? The problem with the Zia era was his inordinate Islamization. And especially why? Not that he took you into the mouth of the US. He was very smart. He did safeguard Pakistan's nuclear program. So it was just that he went overboard with Islamization in order to legitimize himself. So the liberals in Pakistan consider him a totally dark figure. I just wanted to say he was not totally dark. You were taken most, if I may use your phrase, in the mouth of the US during the Musharraf era. That was the era when you really went, and maybe that was also ordained, because giving air bases to the US to operate from here was a bit going too far. एक बच्चा था यहाँ जिसने भी सवाल पूछा था sources का. बेटे, from your question it seems to me that there's something in particular that you would also like to ask. मुझे तुम्हारी बात से उसको दोबारा दीजिएगा माइक, जिन्होंने sources और opinion की बात की थी. Is there anything particular you want to ask
Any particular elements? I just wanted to ask, like the pre-2000s era, like how do you authenticate the sources that you use to testify against the myths of that era? You need to read multiple opinions. If your question is still general, I thought there might be a specific angle to it. Generalized. It's generalized. Then you have to read different opinions. And why did I recommend Naseem Zahra's book on Kargil? Because that book was accepted by the Pakistan Army as well as international opinion. So if it's accepted by both, I guess it makes sense. The gentleman in yes here, and then 2 or 3 at the back, please. Sir, my name is Muhammad Ali Jinnah from Heathering first year. So, sir, my question was that due to the significance of the Pakistan Army in its affairs, do you think the Pakistan Army should have a contribution, not control, but rather contribution to forming governmental policies? You mean in the decision-making process? Yes, sir. Of a government. Constitutional role? Yes, sir. In government. बेटे वो जो जनरल जहांगीर करामत की स्पीच थी ना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे, मैं उसके हक में हूँ, इसलिए कि जब आपके इतने वाइटल स्टेक्स हों पाकिस्तान की मुख्तलिफ चीज़ों में, भी आपको पता है जो अमेरिकन के साथ जो आपकी एग्रीमेंट हुई है वो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ हुई है मिनरल्स के ऊपर, तो आई थिंक कि नेशनल सिक्योरिटी के अंदर मिलिट्री एंड सिविल ऑफिसर्स शुड वर्क टुगेदर, यहाँ तक तो मैं मानता हूँ. But giving a permanent constitutional role, I don't know whether it would help or it wouldn't help. I'm not so sure about it. Principal साहब की इजाज़त से, there were 2 hands at the back. वो questions and then we'll finish. Assalamu alaikum, sir. My name is Elias and I am from the academic first year. Sir, I wanted to ask that during your speech you mentioned one of the Chief Justice as an idiot because of his decision regarding an ex-Prime Minister case. No, not only because of this one decision. Yeah. When you are deciding a case, try to listen to me. Sir, I wanted to ask. एक सेकंड बेटे, मुझे तो बात कर लेने दो. बेटे, अगर आपने एक डिसीजन करना हुआ पार्टी ए और पार्टी बी है, ठीक है, पहले दिन डिस्कशन के दौरान आप पार्टी ए को सिसिलियन माफिया कह देते हैं. That means your judgment is already a foregone conclusion. You've already given yourself away. Judges don't make remarks on people they are judging upon. Their judgments speak, not their remarks. And I told you that, sorry if I कहीं वो contempt of court ही ना लग जाए, अभी के हालात उससे भी ख़राब हैं जो इस वक्त सिटिंग हैं, उन्होंने तो कोई जजमेंट नहीं दिया ना किसी के खिलाफ. You don't make such statements. पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन ए तो है ही माफिया. गॉन, योर जजमेंट इज गॉन, योर डिसीजन इज गॉन. द प्रेस रिपोर्ट्स इट अगले दिन पता चल गया. मैंने इसलिए कहा ही इज अ मैन ऑफ वेरी हाई इंटेलेक्चुअल कैलिबर. आसिफ सईद खोसम. Sir, I wanted to ask basically when that ex-Prime Minister was dissolved from his post, the other party came in. And now that other party was also removed from the post, and the first party that was there at that particular time was now regained the power. Na? So was it all the fault of the judiciary system of Pakistan, or it is the establishment? Because they face serious level threats, and everyone wants to go to their homes live and meet their families. बेटे, एक तो बात यह है कि primarily the establishment, ठीक है. लेकिन बेटे, अगर आपने जज सुप्रीम कोर्ट का बनने का फैसला किया ना, आपको फिर ज़िंदगी में थ्रेट्स को फेस करना चाहिए. मेरी वालदा इज़ 91 years old, ठीक है. शी लिव्स नियर ऑर्डिनेंस मेस रावलपिंडी. सो व्हेन आई वेंट टू ओमान, ऑल द 7 schools were in bad shape. So I took on the mafia in every school. मेरी अम्मी का नंबर सिर्फ मेरे पास है, जो उनका सेल फ़ोन का नंबर है, मेरे स्टाफ के पास नहीं था ओमान में. एक दिन मेरी अम्मी को कॉल आई कि अपने बेटे को समझा लो कि वो ओमान में तो सेफ़ है, पाकिस्तान में हम नहीं छोड़ेंगे, जस्ट सो दैट जस्ट बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू सेट अ स्कूल राइट. तो बेटे फिर आप रुक तो नहीं सकते. यू हैव टू
आपके बड़े बड़े जजेस हैं, बड़े बड़े उन्होंने बड़े बड़े डिक्टेटर्स का मुकाबला किया है. Your point is taken. In front of the gun you can't do anything. So the judges and the establishment both should realize that eventually a strong judiciary protects the rights of citizens. And the rights of citizens, एक और मैं फंडामेंटल बात बता दूं, अब और कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, कि बेटे पाकिस्तान जो है ना, हम कहते हैं, आप किसी से बात करें पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान अजीम पहाड़, नदियाँ, दरिया, जंगल्स, गिलगित, हुंजा. दूसरा आपको कहेगा टैंक्स, मिसाइल्स, आर्टिलरी. पाकिस्तान के लोग हैं. पाकिस्तान की ये बाकी सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये एक्चुअली पाकिस्तान के लोगों का है. पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत एक्सपोर्ट भी उसके लोग हैं. काश मैं आप लोगों के साथ लंबी बात कर सकता. जो पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के लोगों को मिलता है, वो कहते हैं इस जैसा मुल्क ही कोई नहीं. वेस्टर्नर्स, अमेरिकन्स, स्पेनिश लोग. एक दफ़ा बलूचिस्तान जाने से घबरा रहा था एक कपल, पुलिस का, स्पेनिश पुलिस का. वो गया, वापस आया ना, तो वो मेरे लिए कराची से कुछ लेके आया. मैंने कहा यार आप वापस मुझसे क्यों मिलने आए? कहते हैं जब बलूचिस्तान के अंदर से गए तो वहाँ जो फैमिलीज़ थी, उन्होंने अपना लास्ट पीस ऑफ चीज़ मुझे और मेरी बीवी को दे दिया, और अगले दिन मुझे पता चला कि उनके घर लोग भूखे सोए थे. दिस इज़ बलूचिस्तान. ही स्पेशली केम, एंड देयर हैव बीन so many instances where Westerners have come and said what we came to know about Pakistan by going is starkly different from what we heard about Pakistan. ठीक है?